Hi everyone, welcome to Learn for Exam. I'm Atraya Roy and in this video I'm going to talk about mocks and sectionals that you people need to take based on your present scenario of studying. कितना syllabus आप लोगों ने complete किया है, what about the frequency, every of those questions would be answered. But there are four requisites, prerequisites that you need to note down, and अगर आपके पास है then that's good. First is your SWOT. Now you need to understand what are your strengths, weaknesses, कहाँ पे opportunities है, what are your threat areas, ठीक है, because that's most important. Mocks लेने से पहले अगर आपने ये नहीं किया है then that would hamper your preparation. So make sure you understand कहाँ पे आप strong हो, कहाँ पे आप weak हो. Secondly, you need your hands on two things. First is the past year mocks, जो last year के 2016, 17, 18, 19 के जो past year mocks होते हैं different institutes के, get your hands on that. And secondly is past year exam papers. Now exam papers मतलब जो past year exam में आया हुआ है, CAT, NMAT, SNAP, IFT, ZAT, all those papers आप try करो निकालने का. It will take you maybe 2-3 hours. You get your hands on all of those. And then live mocks जो भी आप लोगों ने purchase किया है या few people are planning to purchase, so get your hands on that. Now the entire structure I have divided this into 4 phases. Phase 1 is जहाँ पे आप लोगों ने preparation start किया, let's say एक हफ्ता पहले start किया या फिर people are planning to start your preparation in a day or two. Second is prepare 30%. 30% मतलब let's say verbal में reading comprehension खत्म हो चुका है, then LRDI में थोड़ा सा आपको पता है LR and DI कैसा होता है, quant पे let's say arithmetic आपने finish कर दिया है, that is 30%. 70% is like क्वांट में दो बड़े बड़े चंक्स खत्म हो चुका है एंड एक छोटा सा चंक खत्म हो चुका है. लेट्स से अरिथमेटिक अलजेब्रा इज डन, नंबर सिस्टम इज डन, ठीक है. एलआरडीआई में यू नो टू सॉल्व आधा टाइप ऑफ एलआर क्वेश्चंस, डीआई क्वेश्चंस आते हैं, एंड वर्बल में यू नो about everything about reading comprehension and you know a bit about parajumbles and grammar and all those stuff. And completed basics is like you've completed the basics of the entire syllabus, ठीक है, आपने पूरा syllabus खत्म कर चुके हो आप, ठीक है. Now this is mainly into for people who have just completed the basics and थोड़ा सा L1 L2 levels उन्होंने questions practice कर लिया है. Now if I'll go one by one, ठीक है. Let's talk about the first phase right now. The first phase. Now your target should be going to the second phase. This is the second phase. You need to go prepare 30%, finish off 30% in 3 weeks, ठीक है. Then you should start sectionals not right now but after a month. अभी अगर sectional start करोगे आपको कुछ पता नहीं है, arithmetic शायद आधा complete हो चुका है. Now there are around 30 chapters in quant, है ना. अगर आपको पता नहीं है 30 chapters में if you do not know more than 10-12 chapters, sectional आप जब दोगे out of those 34 questions आपको सिर्फ 5-6 questions के बारे में ही पता होगा, ठीक है. So the entire जो sectional है that goes into a waste. So please do not try any sectionals right now, वो एक महीने बाद होगा. You should take a mock however, ठीक है. Now this would be the baseline mock. Baseline mock क्या होता है, ये आपको बताएगा कि this is your minimum level, इसके नीचे कभी नहीं आना है, ठीक है. Please keep that in mind. Baseline mock के नीचे कभी नहीं आना है. Now there might be mocks which are difficult. There might be mocks as such जिसके वजह से you score less. But always take the baseline mock to be your lowest level. Next, you should take around 10 sectionals. Now मैंने बोला है एक महीने बाद sectional देना है, but you can see the number of sectionals are also high, 10 sectionals. इसी वजह से कि आपका जो practice होगा वो sectional के ऊपर बहुत ज़्यादा weight है, ठीक है. So you people need to give more number of sectionals. Next, past mocks around 10. पास्ट ईयर के जो मॉक्स होंगे वो अराउंड 10. लाइव मॉक्स जो आप लोगों ने परचेज करा है वो भी अराउंड 10 होगा. एंड ऑल ऑफ दोज 10 मॉक्स जो आप लोगों ने परचेज किया, लाइव मॉक्स जो आप लोगे, ऑल शुड बी लाइव एंड टाइम्ड, ठीक है. ऑल शुड बी लाइव एंड टाइम्ड. नेक्स्ट लेट्स कम टू माई सेकेंड फेज जहाँ पे आई प्रिपेयर्ड 30%. नाउ यू शुड टेक 3 weeks टू गो टू द नेक्स्ट फेज, ठीक है. You can start sectionals because you have already completed a good amount of syllabus. तो आप around 10 to 12 question sectional पे attempt कर सकते हो. That you can do right now. But I would rather suggest कि अभी मत करो. Maybe a week or 2 weeks later, that would be a perfect time to start your sectionals. Then you should take a mock every 3 weeks. Now why is the frequency so much? Because आप ज़्यादा prepare अभी तक नहीं कर पाए हो, है ना. You people only know a bit of the entire syllabus. So अभी ज़्यादा mock लोगे तो mock का कोई फायदा नहीं होगा. You'll just take a mock for the sake of taking it. No learning out of it. ठीक है. Now sectionals again around 10 because आप लोगों को भी
प्रैक्टिस, आप लोगों का जो भी प्रैक्टिस होगा वो फाइन ट्यून होगा थ्रू सेक्शनल्स, ठीक है. पास्ट मॉक्स हैव इंक्रीज्ड इट बाय 5. You need to complete at least 15 past mocks and live mocks around 10. ठीक है, all of these 10 mocks should be timed. Next, if you are prepared 70%, I hope यहाँ पे सबसे ज़्यादा students हैं अभी as of now, ठीक है. Now you need to take 2 weeks and move to the last phase, ठीक है, because you need to go to the last phase and that is important. अभी के लिए क्या कर सकते हो, you can start taking a sectional every 2 weeks. मॉक्स एवरी 2 weeks, सेक्शनल्स अराउंड 8 होना चाहिए अभी के लिए, पास्ट मॉक्स अराउंड 20 होना चाहिए, ठीक है. लाइव मॉक्स अराउंड 15 जिनमें से 3 टाइम्ड होंगे एंड 3 अनटाइम्ड होंगे एंड 12 वुड बी टाइम्ड मॉक्स, ठीक है. यहाँ पे व्हाट इज द फोकस? द फोकस इज मोर ऑन पास्ट मॉक्स. सिंस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 70% ऑफ द सिलेबस, सेक्शनल इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, बस पास्ट मॉक्स से आपको सबसे ज्यादा फाइन ट्यूनिंग मिलेगी. यू वुड गेट टू सी अ लॉट ऑफ questions that come in the exam through the past mocks seen only, ठीक है. And then when you are already in the last phase of preparation, for people who are already in the last phase of preparation, you people have done a good job अभी तक, ठीक है. You people should take a sectional every week and mock every week. Sectional बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 1.5 महीने में ही सारे sections खत्म हो जाएंगे. Around 6 is enough, I guess, ठीक है. But you people should focus your entire preparation on past year mocks. Now why entire preparation focus करोगे आप past year mocks पे? Because past year mocks पे आपको ये पता चल जाएगा. So 2 ways होता है, ठीक है. First is you get a good practice of all type of questions, of all sorts of problems that come in the exam. Second, ये past year mocks would help you understand the paper बहुत अच्छे से. Now live mocks से different कैसे है? पास्ट ईयर मॉक्स ज्यादातर लोग अनटाइम लेते हैं. आई एसेंशियली टेल पीपल कि जो भी आप पास्ट ईयर मॉक्स करोगे, टेक इट एज अ प्रैक्टिस मोड, डू नॉट टेक इट एज अ मॉक मोड, ठीक है. प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ मॉक मोड. ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का सोर्स बनेगा, नॉट मॉक दूंगा उससे जो भी मार्क्स आएगा ना एनालाइज दैट. नो, नॉट दैट. यू ऑब्वियसली हैव टू एनालाइज बट डू नॉट कंसिडर मार्क्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम पास्ट ईयर मॉक्स. योर मेजर फोकस शुड बी सॉल्विंग, गेटिंग योर हेड इनटू a lot of new questions and understanding what kind of questions come in the exam, ठीक है. So you people are solving a good number of past year mocks. You people also need to solve good number of live mocks. Now live में मैंने क्या बोला है? 4 of the 20 live mocks that you would be solving would be untimed and 16 would be timed. Now these 16 mocks would tell you कि आपका level of preparation दूसरे बच्चों के respect में क्या है, ठीक है. टाइम मॉक्स का वही सीन बनता है that they'll just tell you what is your level of preparation with respect to other people, because you get a percentile, you get a score, so आपको पता चल जाता है वहां से. Now through all these 4 phases, the most important thing for mocks is you need to analyze each and every mock. मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो people can see out, and वहां पे मैंने बोला है first is how to take a mock, second is how to analyze a mock. So if you want, please go and watch that video. Now एक छोटा सा pro tip, you do not get a lot of marks for solving difficult questions. So your target should be picking those easy questions from that section, solving that out and moving into the next section. Now आप ये चीज बोल सकते हो कि सर आप बोल रहे थे कि 3 weeks में यहाँ जाना है, another 3 weeks में यहाँ जाना है. So essentially everyone would go to phase 4. So why not practice this? Because there's a difference. 3 weeks to complete 30% of the syllabus, another 3 weeks to complete 70%. ऐसे आपको मूव करना. It's not that you would have a lot of time to solve this what I've written here. उतना टाइम आप लोग के पास नहीं होगा. Not issue on that, no issues on, कोई दिक्कत नहीं है यार उस रेस्पेक्ट पे, but you people need to give थोड़ा सा ज्यादा टाइम, ठीक है. And trust me on this, the most number of people who score a lot are essentially from people who are in the first 2 sections, first 2 phases, ठीक है. So you people have to be very focused, you people have to be very energetic, very diligent, and I hope you people would do very good results. If you need any other help, do comment down below and I'll take care of that. I hope this entire structure is clear to all of you. So go and make your schedule, make your mock schedule frequency जो भी आपका है, and start taking mocks. Prepare very well. If you need any help, do let me know. And if you're not connected with us, please make sure you connect with us over YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat at Learn for Exam. I hope you like this video, so please like button दबा देना. Have a very good day ahead and take care of yourselves. Bye bye.